Good morning, my dear brothers, my dear staff, and my dear children. I was asked to give a small message on this wonderful occasion, which you're going to celebrate tomorrow, the Holi as well as International Women's Day. So just comprise both messages together. It is very short because we have been asked to speak very short. So it's clearly very short. Holi is the festival of colors. It's finally here, and the people are rejoicing with the arrival of this festival. I pray that God gives you all the colors of life, the colors of joy, the colors of happiness, the colors of friendship, the colors of love, and any other colors you wish to paint in your life. Have a wonderful Holi celebration today as well as tomorrow. Here are my best wishes to all my international wishes to all on International Women's Day 2023. Women's Day celebrations are observed as an annual feature for over a century. It was first celebrated in 1911 in Austria, Denmark, Germany, and Switzerland, post which, when women gained suffrage in Soviet Russia 1917, 8th March was declared a national holiday day. Across the world, a number of programs and events are organized on this day to inspire women on the path of growth. This day also provides an occasion towards the positive changes that can bring about equal opportunity for all women on earth. Our world would mean nothing without women. Their courage, their resistance, this perfect harmony with amazing tenderness saves our life, our world every day. Happy Women's Day to our mothers, our daughters, and our sisters. Have a wonderful celebration. May God bless all. The vibrancy of colors is something that brings in a lot of positivity in our lives. We play with colors on Holi. Colors have their own psychological significances. They are associated with many human qualities as well. Today, we take a look at these colors in a new light. A very good morning to everyone. Why do humans associate things with colors? While some color preferences do come from culture, others are learned through experiences. As we encounter situations in our daily life, our memory is shaped by some of these experiences and our brain associates emotions with them. Because colors are present in our environment, an emotion color association takes place. As many as are their colors, there are people who can be thought of in context of those. Who are some of the women we recall when we think of a few colors? Let's take a look. Red. From time immemorial, the color red resonates with love, anger, and danger. When one thinks of love, one thinks of his or her mother. Who other than her can love us most unconditionally? Anger, this is from the Indian mythology, is really all because of Shrupnaka that the Ramayana and Draupadi that the Mahabharata even became interesting stories. The fury of those two women led to the downfall of men in power and changed the faces of their respective civilizations.
Danger. Other than figuring on Ariana Grande's song, Dangerous Women, they can be found elsewhere too. Just fool around the house and there comes mom's speech loud and clear. Or in the class, your teacher's big eyes with a voice that means business. Boy, that sure is dangerous enough. Orange, the color that stands for sacrifice, brings to us the memory of Panna Dai, a 16th century nursemaid. She sacrificed her own son to save the kings from the enemy. Also, we salute mothers for having sacrificed their sleep to watch over their infants and those who have sent their sons and daughters to join the armed forces. Blue. The color blue brings in a lot of tranquility. Here, blue reminds us of a lot of action. For the women in blue have made us proud. Hats off to the Indian women's cricket team. Green. This color evokes images of greenery and prosperity. Women, like the earth, are nurturers, but at times, even the earth need to take warriors for its cause. 107 years old, three women, S. Thimakka, Vandana Shiva, and Sunita Narayan. The blood that runs in their veins is green. Yellow, the color of the sun, smiley faces, and sunflowers. A color that's happy and youthful, radiates hope and positivity. Shone brighter when the Supreme Court ruled that women officers are entitled to permanent commission in the armed forces of India. Purple. We think of purple as the color of royalty and luxury. Purple's rarity also gives it an air of mystery and can be associated with creativity as well as the realm of fantasy. Distinguished women in the field of showbiz have mystified us and held the aura of classism about them. Madhubala, Hema Malini, Sushmita Sen, Aishwarya Rai Bachchan, late Lata Mangeshkar, and Priyanka Chopra are no ordinary names. They carry more than just ardent fan following and legacy that shall remain unparalleled in the eras to come. Finally, every color blends in harmoniously to form many and varied personalities all around us. And all of us together are part of the divine light. Thank you. Holi is a great equalizer. Everyone is colored with the same hue. It's more than a festival, it's an emotion and an expression. It celebrates the triumph of good over evil. Holi celebrates love and friendship. Ever wondered why everyone says, Bura na mano, holi hai? It is to remind us that tolerance is a virtue and all of us should aim to be tolerant. This is the school theme for the year 2. Mr. Pankaj Malik now will deliver a short speech to illustrate it further. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इस सड़क पर हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। Respected brothers, my dear students, on behalf of the staff, I take the opportunity of extending my best wishes and greetings to the entire Mennonite family on the joyous occasion of Holi. As we begin with new academic year, may we be renewed in courage and confidence to combat the evil that lurk within laziness, selfishness, greed,
pride, dishonesty, intolerance, and hatred. The festival signifies cleaning and healing of inner self and destroying the every jot of sin to achieve a sense of wholeness and fulfillment. आज के इस उत्साहित माहौल में ऑडिटोरियम में उपस्थित युवाओं, भूतपूर्व युवाओं एवं अभूतपूर्व युवाओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली उमंग, उत्साह, मस्ती और रोमांच का त्योहार है। आइए हम सब इनका आह्वान करें और सभी को एक रंग में रंगकर बंधुत्व को बढ़ावा देने वाला होली का त्योहार, जो कि न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। भले ही विदेशों में मनाई जाने वाली होली का मौसम और हिसाब के समय से मनाने का तरीका अलग हो सकता है, पर संदेश सभी का एक है, प्रेम और भाईचारा, लव एंड ब्रदरहुड। होली के विषय में अनेक कथाएं, पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, अनेक किंवदंतियां हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है जो आप सभी ने अपने जीवन काल में कभी न कभी सुनी होगी, हिरण्यकश्यप एंड प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप एक राजा थे, वो राक्षस वर्ग से थे और उनका पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य उपासक था। लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा की जाए, क्योंकि वो स्वयं को भगवान मानते थे। उन्होंने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयासों में असफल रहे। अंत में उन्होंने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिनको भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती है। तो होलिका, प्रहलाद की बुआ, उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में, जलती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन कहा जाता है कि होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तो यह एक पौराणिक कथा थी। अनेक मतांतर होली के विषय में है, लेकिन भारतवर्ष में होली को अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। होली पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है और इसे मनाने के अलग अलग तौर तरीके भारत की सांस्कृतिक विविधता के दर्शन कराते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कुमायूं की गीत बैठकी, कुमायूं क्षेत्र में होली को गीत बैठकी के नाम से जाना जाता है, जहां पर इस अवसर पर संगीत की बैठकें होती हैं। हरियाणा में धुलेंडी, देवर भाभी को सताने एवं मनाने की प्रथा है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी शिमगा के नाम से प्रचलित है। बंगाल में दोल यात्रा के रूप में चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तमिलनाडु में कमन पोडिगई के रूप में कामदेव की कथा को वसंतोत्सव पर मनाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में रंगोत्सव के साथ लोक गायन की परंपरा है। सिखों द्वारा होली को होला मोहल्ला के रूप में भक्ति एवं शौर्य प्रदर्शन की परंपरा की शुरुआत 1680 में किला आनंदगढ़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं की थी, और बिहार और उत्तर प्रदेश में फगुआ के नाम से रंगोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में तमाशे के रूप में होली मनाई जाती है, और ब्रज बरसाना की होली का एक विशेष महत्व है। यहाँ इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। बरसाना की लठमार होली विश्व में प्रसिद्ध है। होली न केवल एक त्योहार है, यह एक संस्कृति है, यह एक परंपरा है। इसके लिए धर्म और जाति की कोई सीमा नहीं है। सूफी संत अमीर खुसरो ने प्रेम की कितनी उत्कृष्ट व्याख्या अपने बंदों के द्वारा की है। खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा हुआ सो पार। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक है। रंग की उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली
प्रकृति इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। खेतों में सरसों खिल जाती है, प्रकृति पीले रंग में रंग जाती है, बाग बगीचों में फूलों की बहार होती है, पशु पक्षी और मनुष्य सभी उल्लासित होते हैं। इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी लोगों को मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। हमारे पर्व त्योहार के अलावा हम उन्हें पर्व भी कहते हैं, और भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर मनाए जाने वाले अधिकतर पर्व या तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है या सोइंग फेस्टिवल्स हैं। या तो तब मनाए जाते हैं जब फसल बोई जाती है, या तब मनाए जाते हैं जब फसल काटी जाती है। तो होली इज वन ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। होली को होली का नाम देने के लिए कई कथाएं हैं, लेकिन शायद इनमें से आप सबको एक बात अच्छी लगे, आप इसे सुने और समझें। होला, होला कहा जाता है अन्न को, द ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, होला। आपने देखा होगा कि होलिका की जब अग्नि जलाई जाती है तो किसान अपने खेतों से फसल, थोड़ी सी फसल काट के लाते हैं और उसको होली की अग्नि में भूना जाता है और फिर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। शायद कालांतर में आते आते इसका नाम होली इसी वजह से रहा हो। और होली के अगले दिन रंगोत्सव, फाग का उत्सव होता है। तो आइए आपको रंगों की इस लोक से अलौकिक यात्रा का एक आनंद देते हैं। सूरज का लाल रंग, धरती की हरियाली, चांद की चांदनी, इस खुले नीले आसमान में सुंदर इंद्रधनुष के रंग सदैव से मानव जाति के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के रंग हैं, जैसे पृथ्वी का रंग बैंगनी व नारंगी, जल का रंग नीला व हरा, अग्नि का रंग पीला व लाल, हवा का बैंगनी और आकाश का रंग नीला है। इसी प्रकार विभिन्न ग्रह एवं राशियों के अपने अलग अलग रंग हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आए इस त्योहार पर हम अपने आप को और अपने साथ रहने वाले सभी साथियों, अध्यापकों एवं दूसरे व्यक्तियों को इन रंगों से सराबोर करें। एक महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण हिस्सा जो पर्व मनाने की परंपरा है, जो उसका सही स्वरूप है, और आज के संदर्भ में हमने उसके मायने खो दिए हैं। लेकिन हमें होली कैसे मनानी चाहिए, होली का मूल स्वरूप क्या है? It is very unfortunate that today we have cited the folk music, literature and culture, and we have adopted the filmy culture and intolerance, जो सभी समस्याओं की जड़ है। आज जरूरत है अपनी लोक कलाओं को व्यावसायिक बनाने की। फागुनी पाठक और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लोक कलाओं की वजह से भारत के शिखर तक पहुंचे हैं। तो हमें भी अपनी लोक परंपराओं को सहेजना और संभालना चाहिए। इन लोक कलाओं को संवारने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की है, निसंदेह युवा पीढ़ी की है, और आप सब उसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि आज पूरे देश में, पूरे संसार में भारत एक युवा देश के रूप में आगे खड़ा है, जहां बहुत से देशों की अधिकतर आबादी 45 प्लस की एज में पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे पास यूथ है। उस यूथ के दम पर हम हर क्षेत्र में आगे हैं, और इस हमारे यूथ ने हमारे देश को, भारतवर्ष को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो निसंदेह इसमें आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप होली को किस तरीके से मनाएं और अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। पिछली बातों को भूलकर होली को कैसे मनाना है? एज दिस हैज बीन ऑलरेडी अनाउंस्ड, ईयर ऑफ टॉलरेंस। तो होली का एक और अर्थ होता है बच्चों, होली मीन्स हैपेंड, हैज हैपेंड, जो हो चुका हो चुका। होली सो होली। जो पिछली गलत बातें हैं उन्हें भूल जाएं और आगे
हमें सही तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। तो होली के इस स्वरूप को आप पहचानें कि होली सो होली, अब आगे की सुध ले। आधुनिकता और संचार क्रांति के युग में उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने होली का स्वरूप बदल दिया है। आज खुले में मनाए जाने वाला त्यौहार, हर्षोल्लास से मनाए जाने वाला त्यौहार केवल हमारे मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट कर रह गया है और लगता है कि अब होली सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक की होली रह गई है। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग सेंट जॉर्ज स्कूल के इस कैंपस में ब्रदर्स ने हमें जो एटमॉस्फेयर दिया है, हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है, हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के साथ सही रूप में होली को एसजीसी के ग्राउंड में उतारें, इसका आनंद लें और अपनी संस्कृति, प्यार, भाईचारा और हमारे बीच में आए हुए नए मैनोराइट्स का ध्यान रखते हुए होली मनाएं। सुरक्षित होली, सभ्य होली, पर्यावरण संरक्षण की होली। धन्यवाद। Thank you, sir. Holi is one of the most revered festivals of India and is celebrated in almost every part of the country. It is also sometimes called the Festival of Love. And as on this day, people get to unite together, forgetting all resentments and all types of bad feelings towards each other. The students will present a skit on the origin of this festival. दैत्यराज हिरण्यकश्यप का सुंदर व विशाल दरबार लगा है। वह दरबारियों से प्रजा की कुशलता पूछ रहे हैं। प्रजा में सब प्रसन्न तो है, सब कुशल तो है? जी महाराज। तुम सबने सिर क्यों झुकाया है? महाराज, अब कैसे बताएं? साफ साफ बताओ, क्या बात है? महाराज, प्रहलाद जी आजकल विष्णु की आराधना में लीन रहते हैं। और महाराज इतना ही नहीं, वो पूर्ण प्रजा को लेकर विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं। अरे, हमारी भक्ति छोड़कर ये सभी हमारे घोर शत्रु विष्णु की आराधना कर रहे हैं। ये हमारे सैन्य है। कहाँ है प्रहलाद? महाराज, वो देखिए प्रहलाद और प्रजाजन। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। वत्स, ये तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम्हारे भगवान तो हम है ना? नहीं पिताश्री, आप हमारे पिताश्री हैं, लेकिन सबके पालन करता तो विष्णु भगवान है। प्रहलाद, हमारा अपमान करते हुए तुम्हें लज्जा अनुभव नहीं होती? महाराज, मैं आपका अपमान नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ और आपको भी सुझाव देता हूँ कि परम पिता विष्णु की शरण में आ जाए, इससे आपका भी कल्याण होगा। प्रहलाद, अभी भी विष्णु की आराधना छोड़ दो, वरना तुम्हें कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। महाराज, प्रत्येक दंड से बचाने वाले तो मेरे आराध्य हैं, इसीलिए मुझे किसी भी दंड का भय नहीं लगता। हाँ, मैं ईश्वर
ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ सकता। सैनिकों, इसे पकड़कर पर्वत पे ले चलो, इसको वहीं से धक्का मारकर गिरा देते हैं। मैं भी तो देखूं इसका भगवान इसको कैसे बचाता है। नारायण नारायण हरि हरि। को पर्वत से धक्का मार के गिरा दिया जाए। सभी दरबारी धक्का मारते हैं, लेकिन प्रहलाद उठकर खड़ा हो जाता है। पुन श्रीमन नारायण का जाप करता है। नारायण नारायण हरि हरि। अरे नारायण नारायण। अरे इतनी ऊंचाई से कूदकर भी बच गया। ठीक है सैनिकों, इसे पकड़कर अंगारों पर लिटा दिया जाए। नारायण नारायण हरि। सैनिकों, प्रहलाद को अंगारों पर लिटा दिया जाए। दरबारी वैसा ही करते हैं, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर जलने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता और प्रहलाद उठकर पुन श्रीमन नारायण का जाप करता है। लगता है अब मुझे होलिका बहन की ही मदद लेनी पड़ेगी। अरे इस प्रहलाद ने तो पूरी प्रजा को मेरे विरुद्ध भड़का दिया है। कोई मुझे भगवान मानने को राजी ही नहीं है। होलिका, ओ होलिका, आयुष्मान भव। भैया कहिए, कैसे आना हुआ? आज मैं स्वयं को भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। अगर सचमुच भाग्यशाली अनुभव कर रही हो तो मैं तुमसे सहायता लेने आया हूँ। बताओ, मेरा साथ दोगी? आदेश करे भैया। तुम्हें प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठना होगा। वो हमारे बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा। पूरी प्रजा को भी हमारे विरुद्ध भड़का रहा है और हमारे ही सामने हमारे घोर शत्रु विष्णु की आराधना करता है। हम चाहते हैं वह अग्नि में भस्म हो जाए। दया कीजिए भैया, दया कीजिए, ऐसा अपराध ना कीजिए। हम तुम्हें आदेश देते हैं, जैसी तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण। वह दुखी होकर प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाती है। तभी तेज हवा के झोंके से उसकी चुनरी उड़ जाती है। जो वरदान स्वरूप होलिका को मिली थी, चुनरी के उड़ जाने पर होलिका आग में जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद हाथ जोड़कर उन श्रीमन नारायण का जाप करता है। नारायण नारायण हरि हरि। कहाँ है तेरा भगवान? पिताश्री, सब जगह। वहाँ भी जी पिताश्री, वहाँ भी जी पिताश्री, आकाश में भी जी पिताश्री, धरती में भी जी पिताश्री।
तभी नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। और अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती फाड़कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण का जाप करता है। उसके पीछे प्रजा भी जाप को करती है। इस प्रकार भगवान एक क्रूर व अत्याचारी राजा से भक्त की रक्षा करते हैं। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति अपने वरदान और शक्ति का प्रयोग अपने अभिमान और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं, उनका अंत भयानक ही होता है। धन्यवाद। The culturally rich land of India has various festivals on its soil because their essences are so unique. Experiencing each of them is like living 100 lifetimes in one. These celebrations highlight India's beauty. We may be divided by religions, but certainly united by festivals. A few students will present a conversation piece underlining the importance of Holi, followed by Vice Principal Brother Shaju's message and a presentation showcasing another tale behind the origin of this festival. Holi, being the festival of colors, is actually a day worth rejoicing. Men and women dance with utmost joy and enthusiasm to celebrate this festival that marks the divine love of Goddess Radha and Lord Krishna. Presenting before you, straight from Braj-bhumi, the land of the Lord himself, is a group dance performance put together by Manorites dressed as Gopikas and Gopkumars.
बेरज में होली खेलत नंदलाल, बेरज में होली खेलत नंदलाल। बाजत ढोलक ताल मृदंगा, बाजत ढोलक ताल मृदंगा। नाचत करत धमाल, बेरज में होली खेलत नंदलाल, बेरज में होली खेलत नंदलाल। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ रंगों का त्योहार होली के विषय में। नीला पीला हरा लाल गुलाबी रंगों की बौछारें जैसे ही हमारे तन को भिगोती हैं, वैसे ही मन के अनेक रंग, उमंग, उत्साह, प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप एवं मादकता के रंग हृदय में हिलोरे लेने लगते हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सवेरे से ही हुड़दंग मचाते पिचकारी, रंग, गुलाल एवं गुब्बारों से सभी का स्वागत करते, हो हल्ला करते बच्चे जब भावनाओं के अतिरेक से संवेद स्वरों में बोल उठते हैं होली है, तो उनके जादू भरे सम्मोहित से करने वाले शब्दों और विभिन्न रंगों से सने उनके तन एवं जोश जगाने वाले हुलिया को देखकर घर के बड़े बुजुर्ग भी होली के रंग में डूबते उतरते घरों से बाहर निकलते हैं। और तब होली का रंग परवान पर चढ़कर चारों ओर बिखरा नजर आता है। कहीं युवाओं की मस्ती भरी टोली, कहीं महिलाओं की ढोलक की थाप पर नाचती गाती रस बरसाती टोली, और कहीं बुजुर्गों की मदमस्त टोली वातावरण को प्रेम, उदारता, दया एवं अपनेपन के भावों को बिखेरती दिखाई देती है। ये लोग होली के रंगों में रंगे चेहरे पर मुस्कान बिखेरते, एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाते, गले मिलते ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। देश की विभिन्न जातियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी होली के रंगों में रंगे नजर आते हैं। असल में होली एक ऐसा त्योहार है जो जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर हमें ऐसी एकता के सूत्र में बांधता है कि हमारे भीतर के दुर्गुण, नफरत, घृणा, ईर्ष्या भाव जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना उदात्त भाव से प्रकट होती है। हृदय एक दूसरे के लिए उदारता से भर जाता है। और तब दौर चलता है मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू लिए कुल्हड़ों में ठंडाई का, मिठाइयों का, गुजिया, शक्कर पारे, मठरियों, कांजी बड़े, दही बड़ों का एवं विभिन्न टोलियों की डोल मजीरे के साथ स्वर ब्रज की स्वर लहरियाँ एवं थिरकन भला किसका मन नहीं मोह लेती। होली कैसे खेलूंगी रे सावरिया के संग रंग में, होली कैसे खेलूंगी रे सावरिया के संग। अरे तबला बाजे सितार बाजे, तबला बाजे सितार बाजे, और बाजे मृदंग, और बाजे मृदंग। अरे झूम झूम कर सखिया नाचे, झूम झूम कर सखिया नाचे, राधा नाचे संग रंग में, राधा नाचे संग। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा अर्थात अधिकतर मार्च के महीने में मनाया जाता है। पहले दिन रात के समय होलिका दहन और दूसरे दिन सवेरे से दोपहर तक रंगों का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम जपने पर क्रोधित रहते थे, और बार बार समझाए जाने के बावजूद जब प्रहलाद ने विष्णु जी को भजना नहीं छोड़ा तो बच्चे को मरवाने के अनेक उपाय करने लगे, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति से प्रभावित होकर प्रजा भी विष्णु भक्त होती जा रही है।
दंड देने के अनेक तरीके अपनाने पर भी जब प्रहलाद का बाल बांका तक नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान मिला था कि वह अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। बार बार मना करने के बावजूद भाई के क्रोध एवं दबाव के कारण वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि पर बैठ गई। लेकिन परिणाम कुछ और ही निकला। होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि कहते हुए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। कहा भी गया है, ईश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान तब अभिशाप में बदल जाता है तब जब हम उसका गलत कामों में स्वार्थ सिद्धि एवं क्रूरता के लिए उपयोग करते हैं। पारंपरिक तौर पर पूरे देश में किसी न किसी नाम से मनाया जाने वाला ये त्योहार मूल रूप से आपसी वैर भाव को दूर करने, प्रेम एवं सौहार्द के वातावरण को तैयार करने वाला त्योहार है। फिर भी मथुरा, ब्रज, गोकुल एवं बरसाने की होली ये तो कहने ही क्या। आज भी ब्रज में होली रे रसिया, आज भी ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी ब्रज में होली रे रसिया, आज भी ब्रज में होली रे रसिया, होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, ब्रज गाँव की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, ब्रज गाँव की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में। इस अवसर पर कई संस्थाएं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करवाती हैं और उज्जैन में तो महामूर्ख कवि सम्मेलन आयोजित होता है। कहा जाता है कि जो कवि जितनी अधिक मूर्खतापूर्ण कविताओं से श्रोताओं में हंसी एवं बुद्धि पैदा करने में सफल हो जाए, उसे मूर्खराज की उपाधि से नवाजा जाता है और गधे की सवारी करवाई जाती है। लेकिन ऐसे हंसी खुशी एवं उल्लास के माहौल में कुछ लोग मदिरा पान करके लड़ने झगड़ने लगते हैं, रासायनिक रंगों का उपयोग करते हैं, जिससे समाज एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए एवं होली की पवित्रता एवं उसके महत्व को समझते हुए वातावरण को खुशनुमा बनाने में सहयोग देना चाहिए। रंग बरसे भीगे सुनरवारी, रंग बरसे भीगे सुनरवारी, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे सुनरवारी, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे सुनरवारी, रंग बरसे। होली है। धन्यवाद। Dear brothers, members of the staff, my dear students, good afternoon. I feel a sense of immense privilege to be standing up here to honor and celebrate the trailblazers in our lives, the women. At the very outset, I wish all the women present here
a happy Women's Day. You as women play various key roles in our lives. A daughter who serves, a sister who loves, a mother who bears, a friend who cares, a picture of strength and grace, a winner all along. Every home, every heart, every feeling, and every moment of happiness is incomplete without your presence. And let's be honest, we all know that women are pretty amazing. You women possess an ability that makes me jealous. You can multitask like no other, can juggle a million things at once, and do it all wearing a sari. Now that's a mystery which amazes me. If I were to ever be in a position where I would have to wear a sari, the only thing I would be doing is tripping and falling over the places. So kudos to you, your abilities and willpower to keep going even when the times are challenging and demanding. I feel a sense of immense gratitude and thank Almighty for the women in my life, my mother, my sister, and my battalion of cousins, my friends without whom my life would be meaningless, and you, my precious colleagues, without whom our institution would lack the motherly touch it needs. I heartily thank each one of you for your priceless contribution to our lives, for making it a rainbow of colors, just like the festival we are to celebrate. The colors of happiness and joy are the most beautiful colors of life. Hope they stay forever with you. I wish the entire Manorite family, every woman present here in particular, a colorful and cheerful Holi. Thank you. Presenting before you, straight from Braj Bhumi, the land of the Lord Himself, is a group dance performance put together by Manorites
dressed as Gopikas and Gopkumars.
We are sure you have had a very colorful, bright, and joyful morning. We wish everyone a very happy Holi once again. I request Brother Joseph to address us. Dear brothers, dear teachers, and my dear Manorites. First of all, let me all wish you a very happy Choti Holi today, as well as all the ladies in this campus. A happy Women's Day. It is indeed a twin celebration that we will have on 8th of March, that is tomorrow. Since our assembly is being conducted today, we are here to celebrate these two important events. One is the Festival of Colors that we celebrate all over the country today. Another one is the International Women's Day. We can think of a world where we don't have any women. It's impossible. Because even if in St. George's College, though it is an all-boys school, it will become complete only when we have all the lady teachers around us. So they make feel that the motherly feeling, the sisterly feeling, and give us such a comfort and assistance and guidance to lead our life a better one here. So on behalf of all of us gathered here, I must take this opportunity to recognize and appreciate the role that they play in the life of every person, every man in the world. We always know that every person, every man, there is someone behind the success. They say a woman behind the success of every man. Yes, definitely. It starts with our mother. If we know that as a small babies, we have to get that support and always that love and care from our parents, especially from the mother. And from then, you look into our lives, we can see always there is a mother or a sister or a cousin who is a lady who is helping us to lead our life a better one here on earth. When we look at the life of women olden days, probably the role of women were limited to the domestic life, where they were taking care of the children as well as supporting the family at home. But that role has been changed. Today, we can see women has come up in life, in every sphere of life, in every area, whether it is in science and technology, whether it is in medicines, whether any, even computer applications, or even any latest technology, wherever it is involved, we see the women's presence is very much there. And they are equal and recognized par with men. But in some society and some culture, the women still need to come up because they have been not recognized the role that they play. Maybe because of the social religious practices. In some countries, we see that women are not given opportunity same as the men. But in our country, we at least hold very dear the role of a woman. Every mother, every lady is always
referred as a mother because we have such venerational love for our mothers and all the women in our country. And therefore, we must be proud that today we are here to celebrate the great role that they play, which we cannot easily explain. If you ask me the role of a mother at home, we sometimes don't recognize it because it becomes a routine practice that every day what they do. Whether it is morning you get the coffee, whether you get your breakfast, lunch, dinner, or taking care of you when you when you fall sick, all goes automatically without anybody's appreciation or recognition. And it doesn't need anything because there is great love in it. And same is the love, the care that they give to all others too, all around. And in every field today, everywhere in the world, they are recognized. And today we can look at the world today, the world leaders, so many of them are women today ruling the country. So, for example, who is the Prime Minister? Who is the woman today? Anybody can tell me? Right? Okay, you have a number of them, but at this moment, anybody can say who is. We had maybe New Zealand Prime Minister. She was a woman who just resigned from her responsibility, but he did an outstanding job as a Prime Minister. Or even take the case of India, we had the Indira Gandhi. She was also an outstanding person as a woman. And take in our neighboring country, even Prime Minister of Pakistan, Benazir Bhutto, she was a Prime Minister. So even look into a very economically advanced country in Europe, where in Germany we had the Chancellor as Angela Merkel. So all of them have made great contribution. Even today, they make great contribution. And so it is our time as men to appreciate and recognize what role they play in the life of all of us and the contribution that they make to the society, which is very unique, which is very special, which probably sometime men cannot do. It is said that a woman can do two things at a time, but a man cannot do that. So such is the power they have, such is the probably the concentration and the care that they take. Therefore, they are able to do that. A mother can look after the child, at the same time she can read newspaper, or she can even do other things at the same time, which we will not be able to do. Men may not be able to do. Okay, so once again, I wish all the teachers, lady teachers, once again, all the lady staff in the school, Happy Women's Day. Now we come back to our main celebration, Holi. We all know it is a big celebration in our country. I don't need to go and explain all this, but all of you know the importance of this color, the Festival of Color. I pray that the Festival of Color brings more joy into our life, makes us more feel one another, the brotherhood, and the unity of the country, and unity of the society, and unity of a family. Because we are a family, the Manorite family. The colors will make us to feel one another as brothers, sisters, living together in a family. So once again, I am wishing you all a very colorful Holi. May this Festival of Color make all of us happy in this campus, the home away from home, St. George's College. Wishing you all the very best. God bless you all. Thank you, brother, for your kind and encouraging word. We also thank you for all the things you do for us to add to the festivity. The dancers will regale the audience once again.
Everyone please rise up for the school song and the national anthem.